Next one is your Fourier series representation of a discrete time periodic signals. So again, the same things will be repeated over here, except now the signal is discrete time. Earlier we were talking about continuous time, now this is discrete time. So again, according to the Fourier, that any periodic signal can be represented by a linear combination of harmonically related complex exponentials. And we already seen that there are only n number of distinct harmonically related complex exponential are required to represent a discrete time periodic signal. Whereas in case of continuous time, it was infinite number of harmonically related complex exponential, but here only n number of harmonically related complex exponential are required. So according to the definition of discrete time periodic signal, this should be xn equals to x of n plus n, where capital N is known as the fundamental time period and omega naught is 2 pi by n, which is fundamental frequency. So a set of all discrete time complex exponential, that is e to the power j k omega naught n, and if I put the different values of k, so the mathematical formula for finding out the periodic signal in terms of finite number of complex exponential is finally given by this. So any signal which is a periodic signal in discrete time x of n can be written as summation of k indexing of n. This is known as indexing of n. Summation of k indexing of capital N, a k e to the power j k, and if I write omega naught or 2 pi by capital N, same. Now you can see over here there are only capital N number of complex exponential weighted with the Fourier series coefficient ak are sufficient to represent your original periodic signal. Now k could be anything. If you are starting your k from 0, it can be 0 to n minus 1. If you are starting k from 3, it should be n plus 2. The thing is that the range of k must be equals to capital N. And now how will you be able to find out ak? AK you can find out by 1 by capital N summation of n indexing of capital N xn e to the power jk capital omega naught n. And remind one thing, since we know that in discrete time the Fourier coefficient repeats after a time interval. So that means ak equals to ak plus n. This is the important things that you must know. And that is why only capital N number of harmonically related complex exponentials are required to represent the signal or represent a discrete time periodic signal. So this is ak equals to ak plus n. So we'll start with few numericals. Let's say we have cos of pi by 4n. Now by comparing this mathematical expression, you tell me that how many number of Fourier series coefficient you will have to represent this signal. Find out. Tell me the components for a series coefficients that is sufficient to represent this cos pi by 4n. बोलो भाई इतना टाइम कहाँ लग रहा है?
हेलो, हेलो, कोई है नहीं है क्या? सारे लोग सो रहे हैं क्या? अभिजीत, अभिजीत, अभिनव, दोबारा मीटिंग में आ मत जाना तुम लोग। अभिषेक, अभिषेक, यस सर। हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आरव दुबे, यस सर। मैं कुछ पूछ रहा हूँ इतनी देर से, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? यस सर, बट सर आई वाज एब्सेंट इन लास्ट few classes, so that's why सर। इसलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना? यस सर, because sir due to some reason sir I was not able to attend the classes, so it was missing। अभिषेक, यस सर। सुनाई दे रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ तो? यस सर। तो उसका जवाब आ सकता है या नहीं? क्या भगाऊं मीटिंग में से तुमको? आदित्य, आदित्य, सर 8 आएगा 8। क्या 8 आएगा? सर नंबर ऑफ सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड। कितने फोरियर कोफिशिएंट चाहिए? सर फोरियर कोफिशिएंट्स भी सर 8 ही चाहिए होंगे, क्योंकि सर इतने के बाद सर रिपीट करने लगेगा ये। अच्छा, 8 तो उसका टाइम पीरियड है। हाँ ये सर। तो 8 ही चाहिए होंगे इसके लिए। सर ए के इज इक्वल टू ए के प्लस एन होता है सर, कैपिटल एन। सर उसके तो बाद सर उसके 8 के बाद सर वो फोरियर कोफिशिएंट सर रिपीट करने लगेगा, इसलिए सर आई थिंक 8 चाहिए। रिपीट तो करने लगेगा, बट क्वेश्चन देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है? कैसे निकालेंगे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट? हाँ सर, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए के इज इक्वल टू एस समेशन ऑफ 1 बाय कैपिटल एन और ई रेस्ट पावर माइनस जे और उसकी ओमेगा। जरूरत है क्या? इज इट नेसेसरी टू राइट डाउन इन दिस फॉर्म? सर 1 एंड -1 है सर, तो 2 हो जाएंगे फिर। तो k इज इक्वल टू 1 एंड -1 सर, यहाँ पे 2 जगह पे दिखाई दे रहा है। जैसे ई रेस पावर सर j पाई बाई 4 n है, तो वहाँ पे सर 1 है, और सर ई रेस पावर माइनस j पाई बाई 4 n है, तो वहाँ पे -1 है k की वैल्यू। सर 2 तो जगह है, कितने तो सर एक कोफिशिएंट सफिशिएंट है? हाउ सर मेनी 2 कोफिशिएंट्स आर सफिशिएंट? सर 2 आई थिंक सर A1 अभी एंड तो A -1।
अभी तो तुम 8 बोल रहे थे. थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. So there are only two Fourier series coefficient, that is C1 or A1, whatever you want to write. And the Fourier series coefficients are 1 by 2 and 1 by 2. You simply write down this cos pi by 4n in terms of exponential and compare with the original equation. This is the original equation. You can compare with this. So you will have only two Fourier series coefficient. This is this. Okay. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन बताएगा? cos pi by 3n plus sin pi by 4n. cos pi by 3n plus sin pi by 4n. Who is going to tell? जैसे ही मैंने पूछना शुरू किया, मैदान छोड़ के भाग गए ज्यादातर लोग. कीर्ति गुप्ता. कीर्ति गुप्ता, सो रहे हो? भागो यहां से. कप्तान, कप्तान सिंह, तुम भी भागो यहां से. कृष्णा सोनी, ऐसे लगता है जैसे किसी को मेरी बात सुनाई नहीं देती है. सुनाई देती है तो कर क्या रहे हो फिर यहाँ? जय सिंह. Yes, sir. Yes. What will you do for this question? So first of all, so we will expand it in the form of e power minus j into Okay. pi by 3 into n, and Okay, fine. and then we will compare it with summation of a power summation a k into Directly you sin. have to compare, or anything you want to find out first? Sir, we can find out the time period and k value, that is 1 here. Okay, so what you can 1 find or out that minus time 1. period? Who said this is k equals to 1 or minus 1? I thought it will be. How you thought? So because the coefficient of cos of k into pi, so here k should be 1. It's not like that. When you write down this in exponential form, first you need to understand the overall time period of the composite signal. Only then you can compare. How will you find out the overall time period of the composite signal? So by taking the LCM of individuals, Then what is the individual time periods? so 6 and 8, So finally the time period will be. 24. And what about omega, capital omega? Capital omega. So it will be 2 pi by 24, so it will This be is pi pi by by 12. 12. Yes, sir. Now once you know this is pi by 12, only then you can comment on the values of k. Yes, sir. Okay, because it is e to the power j k omega n. Now this omega is this pi by 12. Now you will be able to find out what is the value of k. Yes, sir. Understand? Yes, sir. Now try to find out the answer. Okay, sir. Kaptan Singh. Hers. Hers, can you hear me? If not, then why are you here?
Devansh. Ayush Mishra. Sir, I joined through the branch adding process, so I am not attending the previous classes. So I don't know how to solve. Who is speaking? Devansh, sir. Devansh. Okay. Ayush Mishra. Anupam. This is how your classes is going on. Nobody is responding. Nobody. Present, sir. Aditya Vikram. Yes, sir. क्या आंसर आएगा इसका? Answer I don't know. क्या जानते हो? अपना नाम पता है तुमको? Yes, sir. क्या नाम है तुम्हारा? Sir, Aditya Vikram Singh. कैसे पता है तुमको? Sir, हाउ डू यू नो कि तुम्हारा नाम यही है? मम्मी पापा ने यही रखा था. अच्छा, भूल मत जाना अपना नाम कभी. Sorry, sir. नहीं, भूल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. अपना नाम कभी क्रिस्टोफर कोलंबस रख लो, तुम क्या पता है. क्लास में बैठे हैं, मुंह उठा के बस बोल दिया आंसर आई डोंट नो. क्या कर रहे हैं? घास छील रहे हो बैठ के क्या उसमें? कोई जरूरत नहीं है इस तरह से लोगों को क्लास अटेंड करने की. बिल्कुल मजाक चल रहा है क्लास में. मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ बैठ के 1 घंटे चिल्ला रहा हूँ आप लोगों के लिए. और नेक्स्ट टाइम से कोई मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करेगा. पढ़ना है क्लास में पढ़ो, नहीं भागो यहाँ से. So since this signal is a composite signal, so in order to find out the overall time period of this, first we will go for individual time period, that is 6 and 8. And by taking the LCM of this 6 and 8, we will have 24. And then omega is 24 by 2 pi by 24. This is pi by 12. And I'll expand this cos and sine in terms of exponential. And by knowing the value of omega, that is pi by 12, we will be easily able to know about the coefficient if you compare with the original equation. So we have certain Fourier series coefficient, that is C3, C minus 3, C4 and C minus 1. So these are the Fourier series coefficient by which you will be able to know
or you can explain this, the periodic signal. Now the next question is that x of n equals to summation of k equals to minus infinite to infinite delta n minus 4k. इसको सॉल्व करके बताइए कौन पता कर सकता है what is the value of Fourier series coefficient ak or ck, whatever it is. Bharat is there? Hello? Bharat, are you there in the meeting? No, today he is not here. Now look at the strength of the class. There are only 35 students out of 90. This is how the class is going on. बोला जाता है कि क्लास नहीं लेता है टीचर, क्लास नहीं हो रही है. चलो अभी मैं एक असाइनमेंट ले रहा हूं ऑनलाइन, इस क्वेश्चन को छोड़ो. 2 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे रहा हूं that everybody has to submit. That's all. Be ready for that. आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आने वाला है. हाफ एन आवर बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, आपको सबमिट करना है. Be ready for that. I'll continue this topic after that. देखते हैं कौन कौन आता है. और इसके अलावा कोई ज्वाइन किया, किसी ने किसी को मैसेज पास किया तो समझ लेना तुम लोग. मैं देख रहा हूँ सारा हर कुछ स्क्रीन पर एक एक चीज.